Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now the question is, in a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of the central diffraction band? So the problem is based on the topic wave optics and in particular the single slit experiment. So for the single slit experiment, we know that the width of the central maximum, for example, it is y. So y is given by 2 times lambda capital D upon small d, where y is the width of the central maximum, lambda here is the wavelength, capital D is the distance between the slit and the screen. So capital D is this is the slit, and the distance between slit and this is the screen, it is capital D, and small d is the width of the slit, and lambda is the wavelength of the light used. So this is the formula to calculate the width of the central maxima. So if the width is doubled, if the width of the slit is doubled, for example this small d, it is doubled, so we can say that in the first case y1, that is the width of the central maximum, is 2 lambda capital D upon small d, whereas in the second case it becomes y2 equals to 2 lambda capital D upon 2d. So this is the value of the central maximum in the second case when the width of the slit is made double. So this is equal to lambda d upon small d. Now this value is equal to y1 upon 2. So we can say that the new width of the central maximum, is equal to half, the width of the earlier central maximum. So width of the earlier central maximum was y1, and the width of the new central maximum is y2. So in other words, we can say that the size is become halved. So the answer of the first part is the size become halved, the original value. Now the next thing is the intensity of the central diffraction band. So now the intensity is inversely proportional to the area, and we know that the area is directly directly proportional to y square, the central maximum width square. So in other words, we can say that I is inversely proportional to y square, or we can say that I is some constant upon y square. So in the first case, let us call the intensity as I1. So I1 in the first case is k time y1 square, is k into 1 upon y square. This is the value of I1 in the first case, and I2 is equal to k upon y2 square. Now we know the relationship between y2 and y1. y2 is y1 upon 2. So we put this value here. So this become k upon y1 by 2 whole square. So this comes out to be 4 times k upon y1 square. This is the value of I2. So now if we divide this, for example, we find out the value of I2 upon I1. So this comes out to be 4. Let us call this as equation 1 and this is equation 2. So by equation 2 divided by equation 1, we get I2 upon I1 is equal to 4. So this is the ratio of the intensity, or we can say that the final intensity I2 is 4 times I1, or we can say that in answer 2, for the answer 2, we can say that the intensity becomes 4 times. So this is the answer of the second part of the problem. तो यहाँ पे एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर इस स्लिट की विड्थ को डबल कर दिया जाए तो उस केस में जो सेंट्रल डिफ्रेक्शन बैंड है उसकी साइज और इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ के लिए, इट इज़ 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. नाउ लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है
और कैपिटल डी यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है, स्मॉल डी यहाँ पे स्लिट की विड्थ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट केस में हम कहें अगर y1 बोलते हैं हम इसको, तो y1 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। y2 जो है उसे निकालने के लिए हम d को स्मॉल d को 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि स्लिट की जो विड्थ है उसको 2 टाइम्स कर दिया गया, डबल कर दिया गया है। तो स्मॉल d की जगह 2d हमने पुट कर दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बचता है। ये वैल्यू अगर हम कंपेयर करें y1 से तो ये y1/2 आती है। यानी कि जो नई जो साइज़ है इसका सेंट्रल डिफ्रेक्शन बैंड का, उसका साइज़ पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हाफ्ड। दूसरे पार्ट में कहा गया है इंटेंसिटी का कंपैरिजन हमें करना है। तो इंटेंसिटी के लिए हमें याद रखना है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, जहाँ वाई हमने कैलकुलेट कर रखा है, वाई इज द साइज ऑफ द सेंट्रल डिफ्रेक्शन एंड सेंट्रल मैक्सिमा का जो साइज है वो हो गया वाई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, आई इज इनवर्सली रिलेटेड टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट मान लिया प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, फॉर एग्जांपल स्मॉल के। तो आई1 बराबर हो जाएगा के अपॉन वाई1 स्क्वायर, आई2 हो जाएगा के अपॉन वाई2 स्क्वायर। वाई1 वाई2 में रिलेशन हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं, वाई2 इक्वल्स टू वाई1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें y2 की जगह y1/2 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर बाई 4। 4 न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा 4 के अपॉन y1 स्क्वायर। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2 और इसको हमने i1 बराबर के अपॉन y1 स्क्वायर को कह दिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, जिससे कि हमें रेशियो मिला i2 अपॉन i1 इक्वल्स टू 4, या हम कह सकते हैं i2 इज 4 टाइम्स i1, यानी कि जो फाइनल इंटेंसिटी है वो अर्लियर इंटेंसिटी की 4 टाइम्स हो जाएगी। So this is the answer of the second part of the problem. So hope you understand the explanation.